Okay, so K was the spring constant, which is 50. Extension will be final length minus the original length. So that is 1.6 minus 1.2. Mass is given to you in the question as 0.2. Velocity find out karni hai. That is unknown. And the value of the radius can be observed from the diagram. In this case 1.6. Sort out आप कर लीजिएगा. किसी को चांस मिलता है तो यार जरा वेलोसिटी की वैल्यू सजेस्ट कर देना. आ जाएगा तो मैं लिख देता हूं. 2SF पे राउंड ऑफ करके लिख दीजिएगा प्लीज. 12.6 आ रही है. 13 पे राउंड ऑफ कर देता हूं. करेक्ट टू 2SF. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. फिर आगे थ्योरी करानी है, सो आई मूव ऑन टू दैट. बाद में चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा. अच्छा, आई डोंट थिंक आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने की जरूरत है. वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करता जाऊंगा डेली बेसिस पर. सो आपका पूरा लेक्चर वहां पर आ जाएगा. फिर वहां से जब टाइम मिले तो पूरा रिव्यू कर लेना. तो यू डोंट नीड टू काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट्स वगैरह की जरूरत नहीं है. क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से प्लीज अपने लेक्चर्स वगैरह रिसीव कर लेना. व्हाट इज आर हियर? रेहा, आर इज द रेडियस. सो फॉर्मूले के अंदर मैं जूम इन कर रहा हूं. So R over here is the radius of the circle. And if I go back to the diagram, तो diagram से रेहा आपको radius की value मिल जाएगी, which is 1.6. You should be able to see that. Why not 1.2? 1.2 was the original length, Reha. So when the particle starts moving in a circle, the string will stretch out. And the final length after stretching was 1.6. So when the particle is moving in a circle, the length has increased from 1.2 to become 1.6. Hence we are taking 1.6. ठीक है यार. Moving on. Next वाला example देख लीजिएगा. Okay. So let's suppose if you are given the diagram below shows a mass positioned on a turntable the frictional force which prevents the mass from sliding amounts to 0.9 W, where W represents the weight of the mass. If the mass performs horizontal circular motion whose radius is 0.8 meters, calculate the maximum number of revolutions which the mass can complete in 1 minute. ठीक है, पहले वर्डिंग्स देख लो मेरे साथ साथ, फिर मैं डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लूं. So the diagram below shows a mass positioned on a turntable. The frictional force which prevents the mass from sliding amounts to 0.9 W,
where W represents the weight of the mass. If the mass performs horizontal circular motion, whose radius is 0.8 meters, calculate the maximum number of revolutions which the mass can complete in 1 minute. रोहिल, आपका स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया है, सही लिखा हुआ है कि we will start by finding omega. पहले मैं डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लूं. सो इमेजिन कर ले यार कि ये आपके पास एक सर्कुलर टर्न टेबल का डिस्प्ले गिवन है. The mass is positioned at a distance of 0.8 meters and the turntable is made to perform circular motion. Okay, the question is asking you, यार आपको figure out करना है what is the maximum number of complete revolutions. Wording थोड़ी सी change कर दो. Maximum number of complete revolutions which the mass can perform in 1 minute. So in this scenario, just like in the previous case, your working statement should be that it is the frictional force between the mass and the surface which is responsible for providing the centripetal force. Hence, तो आपका बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पे ये बन जाएगा कि it is the frictional force FF which is responsible for providing the centripetal force FC. नंबर्स में लगाता जा रहा हूँ, कैलकुलेशंस में थोड़ा सा असिस्ट कर दीजिएगा. So the value of the frictional force is given to us in the question. चेक कर लीजिएगा 0.9 W. Centripetal force के लिए we had discussed multiple formulas in the previous class. We will go with mr omega square. So previous example के अंदर we went with mv square upon r. यहाँ पर as you would see in a while mr omega square use करना ज़्यादा sensible है. Let's simplify. Weight की जगह पर आपके पास mg आ जाएगा. Mass will get cancelled. मैं डायग्राम पे वैल्यूज को प्लग इन कर रहा हूँ. सॉरी. So 0.9 times 9.81. रेडियस बेटा डायग्राम में गिवन है 0.8 मीटर्स. यहां से पहले ओमेगा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा. किसी के पास सजेशन होना तो जरा मुझे प्लीज सजेस्ट कर दीजिएगा कि ओमेगा का अमाउंट कितना बनता है और फिर आगे प्रोसीड करते हैं. मैं तब तक एक बाइफिकेशन बना लूं ताकि बाकी का क्वेश्चन इसी स्लाइड पर पूरा हो जाए. ओके 3.32. थैंक यू आयशा. So यार once you have worked out the value of omega, मैं 2SF तक लिख रहा हूँ. So then remember omega is equal to 2 pi upon t. तो यार यहाँ से आपको टाइम पीरियड की वैल्यू भी मिल जाएगी. ये भी जरा कैलकुलेट करके देख लेना यार कि आपके पास टाइम पीरियड का अमाउंट वर्कआउट करके कितना बन रहा है. अहमद इज सेइंग फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लिया. सो अहमद एक सिंपल सी अजम्पशन लो. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वुड यू अग्री इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन द पार्टिकल विल स्लाइड. दैट इज द पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू मूव इन अ सर्कल. सो दिस अहमद टेल्स अस that if the particle is moving in a circle, it is because of the presence of the frictional force. Because once again, Ahmed, I'm repeating, if friction force
wouldn't have been there, then in the absence of the friction force, you can't expect the particle to perform circular motion. ठीक है, टाइम का आंसर बेटा 1.9 आ रहा है. And since the question is asking you कि आप कितने maximum number of revolutions complete करोगे in 1 minute's time, so I guess ये काम मैं कर लेता हूँ. So maximum number of revolutions per minute should be, the time period is 1.9 seconds. So बेटा 60 divided by 1.9 should tell you कि आपके 1 minute के अंदर कितने revolutions आ जाएंगे. ओके 31 एक ने लिखा और एक ने 32 लिखा है. यार कंप्लीट पूछा है, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर दे दो ताकि राउंडिंग ऑफ मैं खुद कर लूं. ओके, सो एक्चुअली इट्स 31.6 and as far as complete revolutions are concerned, so they should be 31. So don't round it up, round it down, because the question was asking you for the number of complete revolutions. मैं complete को underline भी कर रहा हूं. ठीक है, तो वैसे 31.6 आ रहा था, राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास राउंड डाउन कीजिएगा, so 31 will be the maximum number of revolutions. Okay, in the same diagram, थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूं. तो मैं स्क्रीनशॉट्स के लिए रुका हुआ नहीं हूं, अभी अपलोड कर दूंगा वंस द क्लास इज ओवर. तो आई थिंक फिर आप वहीं से फॉलो कर लीजिएगा, आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा. नाउ लेट्स सपोज के फॉर द सेम क्वेश्चन, once again I'm constructing a turntable. Let's suppose there are two particles. They are labeled as A and B. And the question says O is the center. So A and B have identical masses. ठीक है? If the question says the speed of rotation is increased slowly, state and explain which particle A or B will first slide off from the surface. ठीक है, सो हुसैन ने आंसर तो ऑलरेडी दे दिया है. मर्जिया ने लिखा है कांट वी यूज 2πf. बिल्कुल कर सकते हैं मर्जिया. सो इफ यू वांट टू इन्वॉल्व द टर्म फ्रीक्वेंसी f where frequency is 1 upon the time period, that's perfectly all right. उससे भी आंसर आ जाएगा. ओके, उमर आपका आंसर सही नहीं है, बट हुसैन ने सही आंसर सजेस्ट किया है. मैं वर्डिंग्स लिख देता हूं, आप आंसर को अप्रोच कैसे करोगे पहले उसको अंडरस्टैंड कर लो. पॉइंट्स देखते जाइएगा, मैं बुलेट फॉर्म में लिखता जा रहा हूं. बोथ A and B have the same angular velocity. ठीक है, सबसे पहली चीज रिकॉग्नाइज कीजिएगा, ओमेगा की वैल्यू is going to be the same for both of them. Second point, according to V is equal to R omega, V is directly proportional to R. Hence, velocity of B must be greater as compared to velocity of A. ठीक है, ये दो चीजें हो गई. Third statement, centripetal force is given by the formula mr omega square. So centripetal force is directly proportional to R. Hence,
B requires greater centripetal force to remain in its position. और फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट, if friction is unable to meet the demand of the centripetal force, then B slides off before A. मैं थोड़ा सा रुकता हूं ताकि आप सारे स्टेटमेंट्स को जरा प्रॉपर्ली देख लो कि मैंने आंसर को किस फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है. मैं भी साथ साथ रीड कर लेता हूं. So the first thing is both A and B will have the same angular velocity, so omega की value is the same for both of them. His second statement, according to V is equal to R omega, V will be directly proportional to R. Hence, you would expect the velocity of B to be greater as compared to velocity of A. Underline भी कर दिया. Now, since centripetal force is given by the formula mr omega square, the centripetal force is also directly proportional to R. Hence, B requires greater centripetal force to maintain its position. और फिर final वाला statement. If friction is unable to meet the demand of the centripetal force, then B slides off before A. ठीक है, एक तो ये वाली वर्किंग करानी थी, ये भी हो गई. अब आगे की थ्योरी करनी है. प्रोसीड करता जा रहा हूं. मैं रीड कर लूं, मुझे किसी चीज का आंसर तो नहीं देना. सिद्रा ने कहा था बी बिकॉज द रेडियस इज द लार्जेस्ट. सिद्रा, आपका स्टेटमेंट आधा तो सही है, बट आगे की एक्सप्लेनेशन भी देनी थी, वो आपने नहीं दी है. आदम का तो खैर आंसर गलत था कि ए स्लाइड्स ऑफ फर्स्ट. रिहा, आई एम नॉट काइंड ऑफ एबल टू अंडरस्टैंड कि तुमने पूछा क्या है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन मार्क लगाया, मुझे समझ नहीं आया. आप ओके, आई मे बी इफ यू आर आस्किंग मी दिस स्टेटमेंट इज सॉरी, मैं रीड कर देता हूँ रिया. दिस इज अकॉर्डिंग टू, ठीक है, नॉनदलेस मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंशनिंग द वेलोसिटी? वेलोसिटी बताना जरूरी नहीं था. तो शायना, अगर आपने वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, and if you have just given information regarding the radius, that's perfectly all right as well. Last point, Mariam ने लिखा हुआ है. Mariam, remember in the previous example we stated, मैं previous example पे जा रहा हूँ. So in the previous example we stated that axial force which was responsible for making the object remain in circular motion. तो मैंने उसके साथ correlate किया था. So hence, Mariam, the statement which I said was, if particle B requires more centripetal force, and since friction is responsible for providing the centripetal force, so if friction is unable to meet the demand of the centripetal force, then it is possible for particle B to slide off before particle A. So I guess वो आपने follow कर लिया होगा. मरियम, मुझे acknowledge कर दोगी? रोहिल ने लिखा है, सो सेंटर से जितना दूर होगा उतना जल्दी स्लाइड अवे करेगा. बिल्कुल यही होगा. ठीक है, आगे प्रोसीड कर रहा हूं. अब यार जो नेक्स्ट थ्योरी का काम करना है, दिस इज concept of conical pendulum. ओके, मैं डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लूं और साथ में इसकी वर्किंग कर लेते हैं. So first of all, let's have a look at the diagram.
As the name implies, the conical pendulum refers to circular motion performed by a regular pendulum. So if you were to look at the outline which I've constructed, so in a conical pendulum, what we have done is we have taken a regular pendulum. We have started to move this pendulum in a horizontal circular motion, as you can see. And since the shape prescribed resembles that of a cone, hence we make use of the term conical pendulum. Okay, so in simple terms, it's a regular pendulum which is being made to perform horizontal circular motion, as you can see in the diagram. And the fact that the shape that is getting prescribed resembles the structure of a cone, so from there we get the term conical pendulum. So अब इसके अंदर क्या चीजें डिस्कस करनी है वो देख लेते हैं. तो let's start by marking the forces. तो मैं पहला काम ये कर लेता हूँ कि मैं डायग्राम के ऊपर फोर्सेस को मार्क कर देता हूँ. सारे तो नहीं मार्क कर रहा, जो मेरे लिए रेलेवेंट है मैं उन फोर्सेस को मार्क कर लेता हूँ. तो जो एक ऑब्वियस फोर्स आपके पास डायग्राम में आ जाएगा, that is going to be the tension in the string. For the time being एक ये वाला फोर्स मुझे चाहिए होगा, और जो सेकंड वाला फोर्स डायग्राम पे शो कर रहा हूँ, that's the weight of the pendulum. सेकंड काम ये करता हूँ, मैं पॉइंटर साथ में लिखता जा रहा हूँ और डायग्राम पे उसकी वर्किंग अप्रोच करता जा रहा हूँ. सेकंड काम ये कर लेते हैं कि लेट्स रिजॉल्व टेंशन इनटू two components. That is the horizontal component and the vertical component. रेजोल्यूशन को डायग्राम पे शो कर रहा हूं, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं. So let's assume if the thread makes an angle of theta with the vertical. Let's assume if the thread makes an angle of theta with the vertical. अगर आप टेंशन को रिजॉल्व करोगे into two components, तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह का आ जाएगा कि the dotted line which I am constructing with the orange marker, based on alternate angles, the angle marked with the orange marker will also be theta, and the component shown with the dotted orange line, based on resolution, this component can be highlighted and written as T cos theta. तो ये मेरा vertical component का resolution हो गया. And similarly, ये जो purple color से show कर रहा हूं, which is the other component. So owing to resolution, the component shown with the purple marker can be represented in the form of T sin theta. तो पहली चीज मैंने ये suggest करी थी अभी तक कि the name conical pendulum refers to an idea in which a regular pendulum is being made to perform circular motion, and since the path prescribed resembles the shape of a cone, hence we get the term conical pendulum. Secondly, हमने forces को mark किया. So one force was the tension, the other force was the weight. Next, I asked you to resolve the tension into two components, the horizontal and the vertical components. So with the orange marker, you can see the vertical component, and kind of with the purple marker, वो आपके पास horizontal component आ गया है. Now proceeding on with the working. ठीक है, तो अब देखिएगा the component, एक सेकेंड ना, मैं ब्लैक से लिख लूं ताकि यूनिफॉर्मिटी रह जाए. Okay, the component T cos theta will balance out the effect of weight. Hence, T cos theta
इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 हो गई। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूं। whereas the component t sine theta, which is directed towards the center of the circle, provides the centripetal force. Hence, t sine theta is equal to fc. Now, on the basis of these two answers, imagine if I ask you, use the above results to show that, और सपोज करें यू आर एक्सपेक्टेड कि आपको ये रिजल्ट शो करना है। tan of theta is equal to v square upon rg. So जो दो इक्वेशंस आपके पास आई है ना, if you are asked to use this idea to prove the result that tan of theta can be written as v square divided by rg, तो रिजल्ट को कैसे जनरेट करेंगे उसका एक एग्जांपल दे दूं। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो जो ऊपर आपके पास रिजल्ट आए थे ना, मैं उनको यूज कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट एज फॉलोज। टू अराइव एट द आंसर, I'll go with equation 2 divided by equation 1. I think if you notice carefully, you would realize मैं divide इसलिए कर रहा हूं because in the answer they want me to arrive at a result containing the term tan theta. So tan theta की वजह से मैं दोनों functions को divide कर रहा हूं। Let's see क्या बनेगा। तो t sin theta is equal to, मैं centripetal force की जगह कोई ना कोई फॉर्मूला सजेस्ट कर दीजिएगा, वो लगा देता हूं। So I'll go with mv square upon r divided by equation 1 is t cos theta is equal to mg. So मैंने दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल वगैरह कर देता हूं। तो t गेट्स कैंसिल्ड, मास गेट्स कैंसिल्ड। बाकी आई थिंक अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो साइन अपॉन कॉस वर्क्स आउट टू बी tan theta and the right hand side reduces to become v square upon rg. सही। सो रिजल्ट की डेरिवेशन याद रख लीजिएगा। एग्जाम्स के अंदर हाउ डू दे मेक यूज ऑफ दिस क्वेश्चन ना, मैं इसका एक एग्जांपल पहले आपको दे दूं, इसके बाद आगे प्रोसीड करता हूं। सो let me give you an example where they make use of this idea and then I'll proceed on. अच्छा, मैं एग्जाम्पल वगैरह भी जो दूंगा ना वो सारे क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। सो पहले एग्जाम्पल दे दूं फिर आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है, I'll go back to the previous query working in a while, but let me just explain you कि क्वेश्चन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है। फिर आगे प्रोसीड करता हूं। ऑल राइट,
वर्डिंग्स देख लीजिएगा। एडम ने लिखा है साइन अपॉन कॉस, और आई थिंक हाँ एडम मैंने साइन अपॉन कॉस तो कर दिया था, tan थीटा आ गया था। हुसैन ने लिखा था मेक टी द सब्जेक्ट। वैसे हुसैन टी को सब्जेक्ट बनाकर भी आंसर आ सकता था, सो यूर राइट, बट आई थॉट मेरे लिए कन्वीनियंट था कि मैंने डिवाइड कर दिया, तो एज एडम इज सजेस्टिंग मेरे पास साइन अपॉन कॉस आ गया, तो कॉन्सिक्वेंटली मैंने tan थीटा की रिलेशनशिप बना ली थी। बट अदरवाइज यू आर राइट, आई कुड हैव ऑल्टरनेटली मेड टी द सब्जेक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ, सो एटलीस्ट आप वर्डिंग्स को पहले देख लो। इनफैक्ट इसको लैंडस्केप मोड में ले आ। ठीक है, स्क्रीन टर्न हो गई है ना आपके पास। व्हाट ईयर इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा मरियम, सो मर्जिया सॉरी। सो वंस आई मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं आई थिंक मैं इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है मर्जिया, ऑलराइट, वर्डिंग देख लो। अ लार्ज बोल is made from part of a hollow sphere. A small spherical ball is placed inside the bowl and is given a horizontal speed. The ball follows a horizontal circular path of constant radius as shown in figure 2.1. Radius देख लीजिएगा, 14 given है on the diagram. The forces acting on the ball are its weight. तो यार one force is the weight. अभी next diagram में आ जाएगा. And the normal reaction force labeled as R as shown in figure 2.2. तो आगे proceed कर रहा हूँ. So one force is the reaction force that's labeled as R, and the other force is the weight which is labeled as W. ठीक है, मैं highlighter use करके indicate भी कर रहा हूँ. Now the question goes on to say, थोड़ा zoom out कर रहा हूँ. The normal reaction force R is making an angle of theta to the horizontal. So that's given in the diagram. By resolving the reaction force R into two perpendicular components, show that, आपको ये result show करना है. ठीक है, तो यार अब how would we resolve the reaction force R into two perpendicular components, and then how would we show this answer? उसकी working कर लेते हैं. So in the diagram, the horizontal line shown with the orange marker, that can be resolved and written down as R cos theta. And the vertical line shown with the blue marker, I'm about to construct that. It should be appearing in front of you right about now. ये आपके पास आ जाएगा R sin theta. And once again, just like the example that we did, अब इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं. I don't think अब मुझे landscape mode चाहिए. थोड़ा zoom out भी कर रहा हूं. So the portion which I need, I guess वो आपको clearly नजर आ रहा होगा. I need some space for the working. So you should be able to see the diagram. ठीक है, I think perfect है. So पहली equation देख लीजिएगा. The component R sin theta, which is the vertical component, ये आपके weight के साथ balance out करेगा. So that's the first equation. And the other component, R cos theta, which is directed towards the center, लिख देता हूं, directed towards the center. So this will provide the centripetal force. Okay, so R sin theta, the vertical component, balances out with the effect of the weight, and R cos theta, the horizontal component, is responsible for providing the centripetal force. Once again, notice कि आपको आंसर के अंदर tan theta चाहिए, so वही काम कर लेते हैं. So divide कर दीजिएगा equation 1 divided by equation 2. Simplify आप कर लेना. So R sin theta equals to W. R cos theta equals to the centripetal force. Cancel कर देता हूं. Tan theta is equal to W upon F, or
W is equal to F tan theta. ठीक है, ये तो आपको फर्स्ट पार्ट में रिजल्ट चाहिए था, मैं रीड कर लूंगा। रोहेल ने पूछा है आर कॉस थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी रोहेल, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। जब तक सर्कुलर मोशन होगा ना रोहेल, तो हमेशा फोर्स इज गोइंग टू बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके। और मोहित ने लिखा हुआ है सर इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉल। हाँ बिल्कुल सही है। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट पार्ट में एक सेकेंड है, मैं थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर लूं। सेकेंड पार्ट के अंदर स्टेट द सिग्निफिकेंस of the force F for the motion of the ball in the bowl. So the force F provides, एक सेकेंड है मैं नोटिफिकेशन चेक कर लूं। स्टार्ट टाइम मीटिंग रिकॉर्डिंग से। ओके, the force F provides the centripetal force which is required for the object to perform circular motion. Okay, so the significance of the force F was being asked. So the force F provides the centripetal force which is required for the object to perform circular motion. हाँ रोहेल, required by the ball to perform circular motion, that's right. Next part के अंदर it says the ball moves in a circular path whose radius is 14. For this radius the angle theta is 28 and you are expected कि आपको speed calculate करनी है। ठीक है, so based on the formula, जो टॉप पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मैं उसी को यूज कर रहा हूं। सो W equals F tan theta. ओके, वैल्यूज लगाते जा रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा। Weight can be replaced by the term mg. F, which is the centripetal force, so I would go with the result mv square upon r times tan of theta. Mass gets cancelled. बाकी नंबर्स आप खुद लगा लीजिएगा, मैं मेंशन कर दूं। So the value of g 9.81, the value of radius 14 centimeters, so 0.14 meters, and the value of theta 28 degrees. रिप्लेस यार आप लोग जरा प्लीज कर लें, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है। और लीनियर वेलोसिटी का आंसर कितना बनता है वो मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा यार। ठीक है, सॉरी यार वो नोटिफिकेशंस आ रही है तो मैं रिमूव करता जा रहा हूँ। हाँ यार, किसी का अगर वेलोसिटी का कुछ आंसर आ जाए ना तो मुझे 2SF पे राउंड ऑफ करके दे दो। मैं रुका हुआ हूँ, आंसर आता है तो मैं डिस्प्ले कर दूं। 1.6 आ रहा है। थैंक यू सलेमान। ठीक है, जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। हाँ सर बोलो रेहा। हाँ सर बोलो, इट्स ओके रेहा, आई एम रीडिंग द कमेंट्स। तो हाँ यार, डू वी नीड टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस? नहीं। ठीक है, 5 मिनट्स आप लोग रुक जाइएगा यार, मैं जरा सिगरेट फिनिश कर लूं फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। मीनवाइल रीड कर लूं। फोर शुड बी, तब आगे की थ्योरी करानी है, सो आई कंटिन्यू ऑन विद दैट।
ठीक है, 2-3 मिनट रुका हुआ हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूँ. So this is the continuation of the theory. How horizontal circular motion is performed by an aircraft when it tries to bend. ठीक है, सो यार एयरक्राफ्ट के अंदर ये थ्योरी कैसे अप्लाई होती है उसकी वर्किंग देख लेते हैं. सो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, सो इन अ नॉर्मल सिचुएशन, if I were to diagrammatically represent the structure of an aircraft, mind you, मैं पूरा एयरक्राफ्ट तो नहीं बना रहा, ना मुझसे बनेगा, मैं सिर्फ इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूं. तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर the forces which are acting on the aircraft in the vertical plane, forces in the vertical plane, इसमें से एक फोर्स तो आपका होता है वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, मैं डायग्राम पे शो भी करता जा रहा हूं. So that's mg, the weight. And the second force is the lift force, also called the upthrust force. तो ये मैंने डायग्राम के ऊपर अभी हाईलाइट करके बना दिया है. So normal circumstances के अंदर the two forces acting in the vertical plane on an aircraft are as follows: the weight mg vertically downwards and the upthrust or the upward force referred to as the lift force. Weight is vertically downwards, whereas the lift force provided by the engine is always perpendicular to the wings. सही है. So normal circumstances के अंदर अगर आप किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑब्जर्व करोगे, then the forces in the vertical plane, उसमें एक आपके पास weight आ जाएगा, दूसरा आपके पास lift force आ जाएगा. Weight is vertically downwards as you can see in the diagram, whereas the lift force L, which is provided by the engine, is always perpendicular to the wings. तो मैंने डायग्राम पे दोनों शो कर दिए हैं. Now, when this aircraft tries to perform circular motion, तो क्या होगा? So whenever an aircraft makes an attempt to move in a circle, diagrammatically speaking, आपने नोटिस भी किया हुआ होगा कि the pilot always have to bend the aircraft or turn the wings of the aircraft to a certain angle, as you can see in this diagram. जब भी आपके पास aircraft is trying to observe circular motion, उसको अपने wing के span को थोड़ा सा tilt करना पड़ता है, as you can notice in this case. अब why is this tilting action necessary? I think उसकी भी justification मिल जाएगी. So again, if I were to mark the forces, so once again weight, perpendicular, vertically downwards, I'm sorry, and the other force, which is the lift force,
perpendicular to the wings. So your diagram now changes by a slight amount. और जो नई वाली situation आपके पास बन गई है, that is the wind which is appearing in front of you. So when this aircraft is trying to perform circular motion, as I said, okay, the pilot needs to tilt the wings of the aircraft through a certain angle, and that tilting action can be observed in this diagram. अब इसका advantage ये होगा कि once again, if I were to assume the angle shown with the green marker as theta, so let's suppose theta is the angle between the vertical and the lift force. अगर आप resolve करोगे जिस तरह हमने previous example में किया था, so once again you can establish that the force which I am constructing using the orange marker, इसको थोड़ा सा highlight भी कर दूं. So the force which I am constructing using the orange marker, this component of the lift force can be identified as L cos theta, whereas the other component shown with the blue marker, this component can be highlighted as L sin theta. And just like in the previous example of conical pendulum, even in this case, you would recognize that the purpose of L cos theta will be to balance out the effect of the weight. So ये result आ गया. Whereas the purpose of L sin theta will be to provide the centripetal force which is required for circular motion to take place. So the example of conical pendulum, when compared with this example, I think आपको दोनों examples के अंदर similarities मिल जाएंगी. Or I think if you observe the two examples carefully, so I think you can conclude that in case of pendulum, tension resolves to generate centripetal force, whereas in case of aircraft, it is the lift force which resolves itself to generate the centripetal force. So just like in the previous example, हमने tension को resolve किया था, and the component of the tension acting towards the center was responsible for providing the centripetal force. In case of aircraft, it is the component of the lift force which is able to generate the centripetal force. ठीक है, equations मैंने form कर दी हैं और diagrammatic representation बना दी हैं. Equation से मैं learn करने की जरूरत नहीं है. So L cos theta balances out with the weight. इस तरह से भी learn कर लेंगे तो काफी है. And L sin theta is responsible for providing the centripetal force. तो उससे भी काम चल जाएगा. Okay, थोड़ा सा और आगे proceed करना है. So अब जो next वाली working करनी है, this working now takes into account the theory for vertical circular motion. ओके, रोहेल ने लिखा हुआ है लिफ्ट फोर्स का कंपोनेंट बनेगा, बिल्कुल सही वर्डिंग है. और रोहेल ने लिखा हुआ है एल साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सही है. और एल कॉस थीटा वेट के इक्वल होगा. तो रोहेल तुमने आधा स्टेटमेंट सही लिखा था, आधा गलत लिखा हुआ था. कंजा ने लिखा हुआ है कैन यू रीड आउट द रिटन थ्योरी वंस. हाँ, मैं रीड कर लेता हूँ. ओके, सो कंजा मैं पूरा रीड कर रहा हूँ. इट शुड बी अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ यू. एक सेकेंड होल्ड करना, लेट द स्क्रीन. ठीक है, स्टेटमेंट क्विकली रीड कर लूं फिर आगे प्रोसीड करता हूं. सो अंडर द हेडिंग
the basic statement was how horizontal circular motion is performed by an aircraft when it tries to bend. So under normal situation, forces in the vertical plane involve the weight and the lift force, also called as the upthrust force. Weight is vertically downwards, whereas the lift force L provided by the engine is always perpendicular to the wings. Uske baad, when this aircraft tries to perform circular motion, then the diagram, resolution मैंने कर दी थी, equations form कर दी थी, और मैंने final conclusion ये लिखा था कि in case of pendulum, tension resolves to generate the centripetal force, whereas in case of aircraft, the lift force resolves to generate the centripetal force. Labeling अगर चाहिए हो ना तो मैं कर देता हूं before I proceed. Tension resolves to generate the centripetal force. Lift force resolves to generate the centripetal force. रेहा अब आज देखूंगा सिचुएशन कैसी बनती है, फिर इसके बाद डिसाइड करूंगा बेटा. ठीक है रेहा? All right. Moving on further. So theory for vertical circular motion क्या बनेगा? डायग्राम पहले देख लीजिएगा, फिर प्रोसीड करते हैं. ओके, आई थिंक इनफ स्पेस है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंप्लीट डायग्राम बन सकता है. थोड़ा ज्यादा बड़ा ही करके बना रहा हूं इनफैक्ट. आई एम लेबलिंग द हाईएस्ट पॉइंट एज ए. The string is shown to be attached with the particle. The center is labeled as O. ठीक है. So let's suppose if a particle is being made to perform vertical circular motion, as you can see in this diagram. I'm assuming that the particle is being meant to revolve in a clockwise direction. और अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है वो देख लेते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग विद द पॉइंट ए, मैं डायग्राम के ऊपर फोर्सेस वगैरह मार्क कर रहा हूं, आप जरा देख लीजिएगा. एट द पॉइंट ए, इफ यू आर आस्क्ड टू मार्क द फोर्सेस, you would recognize that one force is going to be the tension in the string. The other force is going to be the weight of the object. So for point A, which is the highest point, we can say that both tension as well as weight collectively provide the centripetal force. है ना? So अगर आप डायग्राम को फॉलो करोगे A वाले पॉइंट को, so both tension in the string as well as the weight of the object mg are directed towards the center of the circle. So we can say tension and weight collectively, T plus mg, are responsible for providing the centripetal force. If I replace the formula for centripetal force, so I'll end up getting T plus mg is equal to mv square upon r. And if I make tension the subject, so I'll finally end up getting mv square upon r minus mg. So at the highest point in a vertical circular motion, sorry yaar, isko zara shift kar do. So at the highest point A in vertical circular motion, both tension and weight are acting towards the center. Therefore, they will both collectively provide the centripetal force. Hence, T plus mg is equal to the centripetal force. I've replaced the centripetal force with the equivalent formula of mv square upon r, and then finally I've made T the subject. So ये मेरे पास वर्कआउट करके रिजल्ट आ गया. M को कॉमन निकालना हो तो बिल्कुल निकाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं है. मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने M को रोहेल कॉमन नहीं निकाला. बट यस, इफ यू वांट तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. मैं
इसके साथ रेलेवेंट स्टेटमेंट लिख दूं। ओके, कहाँ लिखूं? इसी के नीचे लिख रहा हूं। बोथ टेंशन एंड वेट आर टूवर्ड्स द सेंटर, hence they collectively provide the centripetal force. ठीक है, the red working goes with the red diagram. Okay, coming back to this, what if the particle is at the position shown with the green marker? So while performing circular motion, after some time, the particle reaches the position shown with the green marker. इसको मैंने B से लेबल कर दिया है। थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। तो if I now ask you कि आपको B वाले पॉइंट के लिए जरा सजेशन देना है कि फोर्सेस कैसे मार्क करेंगे, तो at the point B you would agree tension will still be towards the center, weight is going to be vertically downwards. तो for B इसी के साथ मैं लिख रहा हूं, green goes with green. For B only tension is towards the center, hence only tension provides the centripetal force. If you're okay with the wording shown with the green marker, so उसका ये result आ जाएगा, only tension is acting towards the center of the circle, hence only tension will provide the centripetal force. So I've written T is equal to FC. Replace कर दूंगा तो मेरा green वाला answer is for the green portion of the diagram. इसके अराउंड भी बॉक्स बना देता हूं। ये दो रिजल्ट्स हो गए। अभी एक और पॉइंट पे मूव कर जाते हैं। इक्वेशन जरा प्लीज कोशिश कीजिएगा याद रह जाए। सो ए वाज द हाईएस्ट पॉइंट, उसके लिए इक्वेशन 1 इज वैलिड, दैट्स द वन शोन विद द रेड मार्कर। बी इज द पॉइंट टू द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, उसको मैंने ग्रीन से शो किया हुआ था, इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अच्छा, दो पॉइंट्स और भी रह गए, तो उनके लिए भी आपकी वर्किंग हो जाएगी। एक को पर्पल से शो कर देता हूं। पहले ये वाला पॉइंट बना दूं क्योंकि इसके लिए जगह है मेरे पास। आई एम श्योर यू वुड एग्री कि मुझे डी के लिए ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वंस अगेन टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर, वेट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैं डी के लिए ये लिख देता हूं, फॉर डी सेम एज बी, hence T is equal to mv square upon r। तो पूरी वर्किंग की जरूरत नहीं थी, सेम आंसर एज द वन फॉर बी। तो ये आपके पास एक थर्ड रिजल्ट आ गया। और फाइनली जो बॉटम मोस्ट पॉइंट रह गया है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी। So what I'll do is I'll show that on this diagram.
ये ऑरेंज से शो कर रहा हूं। बॉटम वाले पॉइंट को लेबल कर देता हूं C, और बॉटम वाले पॉइंट के लिए फोर्सेस मार्क कर लेता हूं। थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि फोर्सेस आपको प्रॉपरली नजर आ जाए। अगेन टेंशन आ जाएगा, और वेट आ जाएगा। सी वाले पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके फाइनल वर्किंग कंक्लूड कर देता हूं। डायग्राम फॉलो कर लीजिएगा और मैं सी वाले पॉइंट के लिए वर्डिंग्स लिख लूं। तो फॉर सी, so in the diagram, the green portion of the diagram goes with the green wording. The red portion of the diagram goes with the red working. The maroon portion or the blue portion goes with the blue working, जो भी हो, और ऑरेंज वाली रह गई है उसको भी कंक्लूड कर रहा हूं। तो फॉर सी, which is the lowest point, वर्डिंग्स पहले देख लीजिएगा। Since tension and weight are in opposite directions, therefore the resultant force T minus mg will provide the centripetal force. Hence, T minus mg, minus इसलिए because they are acting in the opposite direction, provides the centripetal force. If you replace the formula, you end up getting the result T minus mg is equal to mv square upon r. And the final result, if you make T the subject, turns out to be T is equal to mv square upon r plus mg. तो ये आपका फोर्थ रिजल्ट आ गया। So to conclude this working, I'm going back to the original diagram. A was the highest point. उसकी इक्वेशन का रिजल्ट आ गया, that is equation 1. वापस कह रहा हूं, A is the highest point. That result is shown in equation 1. Okay, थोड़ा zoom out कर रहा हूं. The point B, shown with the green marker, which is on the extreme right hand side, उसका result is shown in equation number 2. अच्छा, फिर further, the point D, which is on the extreme left hand side, उसका result is shown in equation number 3. और फिर finally, the point C, which is the lowest point in the working, उसका रिजल्ट आपके पास इक्वेशन नंबर 4 के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अहमद अरशद ने लिखा हुआ है, सर टेंशन mg के बराबर नहीं होगी। तो अहमद, मैं तुम्हारे लिए जूम इन कर रहा हूं। तो जिस पोर्शन के बारे में तुमने क्वेश्चन पूछा है कि सर टेंशन mg के बराबर नहीं होगी, तो नोट करो कि अगर टेंशन एंड mg दोनों इक्वल हो जाएं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सजेस्टिंग, तो फिर तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया तो फिर सर्कुलर मोशन तो हो ही नहीं सकेगा, बिकॉज रिमेंबर अहमद, फॉर सर्कुलर मोशन टू टेक प्लेस
there must always be a force directed towards the center of the circle. सही है? So to challenge your question, tension and mg cannot be equal to each other, because अगर दोनों को मैं equal कर दूंगा, तो as you can notice the resultant force will become 0, और अगर resultant force 0 हो गया तो फिर circular motion होने का तो chance ही नहीं बनेगा. ठीक है? So I hope that explains your ठीक है. Yes sir, got it. तो ये मैं arrows जो बनाए थे ना, ये erase कर दूं. एक सेकेंड ना. और जो फाइनल आंसर्स मेरे पास आए थे उनको जरा फॉर्मेडेबल फॉर्म में लिखकर फिर मैं क्लास को कंक्लूड कर दूंगा. सो ये अभी अपलोड कर दूंगा, बट नॉनदलेस जो आंसर्स मेरे पास आए हैं इनको जरा एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लूं. सो एज अ कंक्लूजन वी कैन से कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर द वैल्यू ऑफ द टेंशन इज द लीस्ट. दैट इज T is equal to mv square upon r minus mg. ठीक है, इफ यू वांट तो मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा. अगर आपको वो रिजल्ट याद ना हो तो मैं भी कंफर्म करने के लिए दोबारा शिफ्ट अप कर दूंगा, बट स्टेटमेंट्स पहले कंप्लीट कर दूं. फिर देन वी हैव रियलाइज्ड कि लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर द वैल्यू ऑफ द टेंशन वर्कड आउट टू बी द ग्रेटेस्ट, and the answer was T is equal to mv square upon r plus mg. And for the other 2 points, left and right, the value of the tension. तो मैंने वो सारे के सारे जो डायग्राम के साथ साथ आंसर्स लिखे थे डिफरेंट कलर्स के साथ, उन सारे के सारे आंसर्स को यहां पर इंक्लूड कर दिया है. अगर याद रह सके तो इन आंसर्स को आप देख लीजिएगा. What if it's in between A and B? Let me see. तो रेहा यहां कहीं पर अगर पार्टिकल होगा ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम के ऊपर, तो इसकी वाली वर्किंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इसका अलग फॉर्मूला कराना है. तो मैंने जो 4 पॉइंट्स रखे हैं ना रेहा, मोस्ट कॉमनली ये वाले चारों पॉइंट्स पूछे जाते हैं. और अगर आपके पास कोई इन बिटवीन वाला पॉइंट होगा, आइदर इट्स इन बिटवीन ए एंड बी और इट्स इन बिटवीन बी एंड सी, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, तो उसका सेपरेट फॉर्मूला है, वो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में इंडिकेट कर दूंगा. कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे. रोहेल इज राइट. अहमद इज सेइंग हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 क्यों नहीं होगी? तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगी तो बेटा फिर तो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से गिर जाएगा नीचे, फिर तो सर्कुलर मोशन होने की जरूरत ही नहीं है. सो अगर टेंशन नहीं होगी हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा, तो फिर तो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते ही सीधा नीचे गिर जाएगा rather than performing circular motion. So एक चीज तो आई थिंक अहमद को भी आंसर मिल गया. और मुझे एक्चुअली जो एक चीज और बतानी थी, so I leave the diagram as it is. मुझे बस ये स्टेट करना था. Hence we can conclude that in vertical circular motion, the magnitude of tension varies as the
position of the particle changes. So hence we can conclude that in vertical circular motion, the magnitude of tension varies as the position of the particle changes. ठीक है guys. उमर तुम हमजा से बात कर लेना, तो I guess coordinate कर लेना. If it's okay with Hamza, he'll help you out with that. ठीक है उमर? चलो guys, I think मैं यहाँ पर जाकर जो है ना वो आज बहुत सारा काम करवा लिया. बस let me see.